In today's lecture, we will read about 5-year plans, one of the most important topics of Indian economy. So many questions have been asked. Sometimes, what was the goal of the plans? Sometimes the chronology. Sometimes, who was the first chairman of Finance Commission, etc. So many things have been asked related to the 5-year plans, and they are one of the most important topic. So, I will try to read and tell you one few of the most important things which is related to 5-year plans in this video. So let's start. So first we will read about the first plan. First plan started in the 1951 and ended in 1956. The growth was targeted was 2.1 and the actual growth was more than targeted growth. So you have to remember actual growth was more than targeted growth. It is based on Harrod-Domar model. First plan is based on Harrod-Domar model. Okay? And influx of refugees, as you know that was the time just after the partition. So there was influx of refugee, there was severe food shortages, mounting inflation, and we were struggling with the production level of agriculture. So the plan focused on agriculture and inflation, power, transport. These are all the major concerns. It was a successful plan because the harvest also enhanced, rehabilitation of refugee also happened, and we tried to achieve the food sufficiency. Inflation also we controlled. So first plan was majorly trying to tackle the scars of partition and the colonial legacy of famines, etc. So you have to remember Harrod-Domar model is related to first plan. Then comes the second plan. Second plan also related to Harrod-Domar model. Okay? And here Mahalanobis plan. PC Mahalanobis was the head of the Indian Statistical Institute, father of Indian statistics, and he is the man behind all the calculations of this GDP, and our statistical analysis and research level was far ahead than West, thanks to this person PC Mahalanobis, that you have to remember. So Mahalanobis plan focused on resource allocation to broad sectors such as agriculture, industry. So it also started focusing on industry. This plan started focusing on rapid industrialization, on heavy and basic industry. You must have read about the steel plants and the power plants, the dams. These were constructed. So rapid industrialization was focused based on the Mahalanobis plan, and it advocated huge imports through foreign loans. अब इन सबको बनाने में you will need to have imports and also need the foreign support. So foreign loans भी बहुत we had to take. This was based on the socialistic pattern. If you see the Russian model, there also they had focused on this heavy industries, and Russia still have heavy industries. So it was based moreover on the socialistic pattern. It was not that successful, moderately successful, because inflation could not be controlled. Then comes the third plan. Third plan targeted 5.6% growth and achieved just half of that. Okay. Second plan almost achieved it. Third plan miserably failed it. So the third plan was the plan which talked about making India self-reliant. Third plan, self-reliant and self-generating economy. Somewhat related to the Atmanirbhar, but Atmanirbhar does not close the door. It wants to actively participate with the globalized world. Agriculture was as before given top priority to support the exports and industry. Failed to achieve targets because there were several droughts, and there was also war with the Pakistan 1965. So the third plan miserably failed, and in this plan itself, Gadgil formula was associated with third plan. Now you have to remember one trick, that after the odd number of plans like 3, 5 and 7, there is a certain kind of break which can be seen. Why I am telling this? So there will be some plan holiday, some rolling plan. There is some break in the plans. That so if the UPSC asks, so remember this odd number 3, 5, 7. So after third plan, there was a plan holiday 1966 to 69. In that Gadgil formula was devised. Okay, 1966 to 69. In that Gadgil formula was devised
Focus was on green revolution. This was the time period of Lal Bahadur Shastri, LBS, and import substitution was also one of the goal. Then comes the time period of Mrs. Indira Gandhi, fourth 5-year plan, 1969 to 74, tried to achieve growth of 5.7%, reached only 3.3%. That's why it was also called as period of Hindu growth rate. Okay. The focus was growth with stability and self-reliance. Stability was one of the focus, that sustained growth is needed. As self-reliance also, because this was the time period of turbulent phase, and the footprint of the Pakistan and American collaboration was increasing. China was also coming closer to United States of America. This was the time period of Nixon, and India was going slowly towards Russia, and unknowingly becoming the part of the Cold War tactics and politics. Okay, so that's why the focus was again on to maintain the sovereignty on self-reliance, stability and self-reliance. Emphasis on agriculture growth was there, and a failure because there were rising price. Bangladeshi refugee crisis was there. So 71 war happened. Nationalization of bank was one of the policies which was seen as something in positive light, because it wanted to have financial inclusion in the country. Then comes the fifth 5-year plan, and it started in 74, ended in 79. Okay, and so it wanted to achieve a growth of 4.4, and it achieved 4.8. So it achieved more than what it was expected. And then the clarion call of Garibi Hatao and self-reliance was given. Garibi Hatao and self-reliance, 20-point program of Mrs. Gandhi, and then there was a 4-point program of Mrs. Sanjay Gandhi. So these were the time period. Promotion of high rate of growth, better distribution of income, that is a financial inclusion, equity maintain karna, and significant growth in the domestic rate of saving were seen as key instrument. So saving rate ko bhi badhana. And minimum needs program was there. Regional rural banks were established. Food for work program started here. And then there was a discontinuity, as I said कि odd number के बाद discontinuity हुई थी 79 to 80. ठीक है, जनता पार्टी का टाइम आ गया था, the government of जनता पार्टी. Then 1980 to 85, 5.2 का टारगेट रखा था, and जो एक्चुअल ग्रोथ था वो उससे ज़्यादा था 5.7. इट फोकस्ड ऑन इंक्रीजिंग नेशनल इनकम एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, रिमूव पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. सो देखिए, पॉवर्टी कांस्टेंट रह, गरीबी हटाओ पहले भी था, पॉवर्टी अभी भी रहे, क्योंकि पॉवर्टी स्टार्टेड इंक्रीजिंग एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज एट वेरी हाई लेवल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की भी आवश्यकता हुई थी टू इंक्रीज द प्रोडक्शन लेवल, तभी नेशनल इनकम बढ़ेगा, तभी आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी. Then comes the seventh plan, 1985 to 90, the time period of Mr. Rajiv Gandhi, who wanted to have technology, who wanted to bring ICT revolution. So the things will be also related to that. It targeted the growth of 5% and achieved the growth of 6%. The first time we achieved 6% growth in this 7th 5-year plan. It aimed at accelerating food grain production, increasing employment opportunity, raising productivity. Focus on food, work and productivity. क्या मतलब? खाना, रोजगार और प्रोडक्टिविटी, तीनों को बढ़ाना. फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. 7th 5-year प्लान, मिस्टर राजीव गांधी. प्लान सक्सेसफुल था बिकॉज वी अचीव 6% ग्रोथ एंड दिस वाज द हाईएस्ट. ठीक है, एंड स्ट्रगल्ड आउट ऑफ द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से बाहर निकला था इन द 7th 5-year प्लान विच फोकस्ड ऑन फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी. देन कम्स द 8th 5-year प्लान. अगेन देयर वाज अ गैप, एज आई टोल्ड यू. इस 7th के बाद फिर एक गैप आएगा. ठीक है, जैसे छोटे छोटे प्लान है, देखा 3, 5, 7 के बाद ब्रेक है, दैट यू हैव टू रिमेंबर. 1992 to 1997, the time period of the resurgent India, PV Narasimha Rao, and opening of the economy, achieving more growth. So all the things will be here. 5.6 was target, but we achieved 6.8% first time. ठीक है, based on John Miller model. You have to remember that this 8th 5-year plan was based on John Miller model. And what was the situation that time? We had an import cover of very less days, around 15 days. Our balance of payment was in a very bad position. There was a rising debt,
widening budget deficit, recession was there, inflation, every kind of problem was there. So we target a high growth of agriculture and allied sector. Allied मतलब food processing, fishery, सब कुछ, livestock. And manufacturing sector को growth देना, and growth in exports and imports, improvement in trade and current account deficit. Export बढ़ेगा तभी तो अपना जो deficit है वो सही होगा. High growth rate was achieved even though the share of public sector in total investment had declined considerably to over 34%. Because we started coming out of the socialistic model slowly, which focused on the public sector, government sector. But to develop the country fast, one needs to have a very vibrant private sector. No country in this world has become the superpower solely based on the government sector, because there is an inherent drawback in the government sector, because it does not work on the competitive model. And when there is no competitive model, then export increase होना, आउटपुट जो निकलना है उसका जो आउटपुट रेशियो होता है वो गड़बड़ हो जाता है. सो ये सारी चीजें, इसी कारण रशिया का भी डाउनफॉल हुआ. ठीक है, तो इस वजह से हम उन क्लचेस से बाहर आना शुरू हुए. नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, वन ऑफ द फ्लैगशिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, इज रिलेटेड टू 8th 5-year प्लान. इसका एक रिकैप भी लेंगे लास्ट में. फिर 9th 5-year प्लान आया 1997 से 2002 तक. टारगेट रखा 6.5 बट कुड नॉट अचीव इट. वी अचीव्ड ओनली 5.4% ग्रोथ. थोड़ा सा टर्बुलेंट फेज भी था. टर्बुलेंट फेज इसलिए था कि इसमें आई.के. गुजराल वगैरह भी, फिर अटल बिहारी वाजपेयी आए. ठीक है, थोड़ा 2-3 गवर्नमेंट का ये टाइम रहा था. एंड इसका फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्विटी, मोस्टली इंडिकेटिव प्लानिंग था. ठीक है, इंडिकेटिव प्लानिंग वर्ड अगर आए ना तो इससे रखना. सोशल जस्टिस की भी बात जो है इक्विटी की क्लियरली 9th 5-year प्लान में की गई थी. ग्लोबल स्लो डाउन था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ये भी एक फैक्टर था कि अचीव नहीं कर पाए. देन कम्स दी, और वो पोखरन वाला हुआ था, फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगे थे, तो एवरीथिंग प्लेड अ रोल. 10th 5-year प्लान 2002 to 2007, स्टार्टिंग ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ठीक है, गोल्डन एरा ऑफ इंडियन इकोनॉमी. 8% was target, which is 7.6%, which is highest ever since independence. It had set monitorable targets, monitor कर सकें जिसको, for few key indicators. 11 indicators रखे थे जिसको monitor करना है, of development beside 8% growth target. The target इन्हें include किया था gender gap को. पहली बार देखो gender gap जो literacy में है ना, आपने देखा होगा तो right to education act वगैरह इसी टाइम पीरियड में आए हैं. राइट, RTE वगैरह आए इसी टाइम में है. लिटरेसी को बढ़ावा देना. There is a famous speech and interview both of Atal Bihari Vajpayee, in which he had told that after 50 years of independence, we are still struggling with the literacy rate. Around 40% of the population still are not literate. So now our focus should be that we should improve our literacy rate, and this is given in this. Also, वेज रेट को भी सही करना, रिडक्शन इन IMR एंड MMR. ठीक है, मोर्टेलिटी रेट को कम करना. इम्प्रूवमेंट इन लिटरेसी, एक्सेस टू पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीनिंग ऑफ मेजर पॉल्यूटेड रिवर्स. ये देखा होगा आपने बहुत सारे पॉल्यूटेड रिवर्स, गंगा, यमुना, इन सब के बारे में देयर वाज लॉट ऑफ टॉक. Governance was considered as factor of development. Agriculture was declared as prime moving force of the economy. That's why National Governance Day on 25th December is celebrated on the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee, because he was the man who envisaged that governance is a crucial factor for the development. Government से governance पे आने का जो है ना, और फिर अब ये minimum government maximum governance जो अब आया 2014 के बाद, but जो the main man Atal Bihari Vajpayee who envisaged this कि governance is a crucial factor of development. And agriculture, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान. तो अनुसंधान पे उन्होंने फोकस किया था. जय जवान जय किसान LBS ने दिया था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने. एंड जय अनुसंधान, focus on science and technology was given by Atal Bihari Vajpayee. States role in planning was to be increased with greater involvement of पंचायती राज. तो ये devolution of power भी करना चाहते थे, PRA का involvement भी. Balanced development of all states. तो जो states में जो parity खराब हो रही थी कि कुछ states में development हो रहा था, कुछ states were going backward, specifically the eastern part of the country. So उस पे focus किया कि equity बने. Then comes the 11th 5-year plan 2007 to 2012. Again a very fast growth. 9% was target, 8% we achieved. First time we have reached the value of 8% in the 11th 5-year plan. The goal was towards faster and more inclusive growth. Faster growth के साथ साथ inclusive growth भी नहीं कि GDP increase हो रहा but the growth is not inclusive.
India had emerged as one of the fastest growing economy in the world during the tenure of Dr. Manmohan Singh. This was the golden phase of rapidly growing Indian economy. The saving and investment rate had increased 33-34% तक सेविंग चला गया था, ठीक है. फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाज आल्सो इंक्रीजिंग. लेकिन वही बोला जाता कि एक क्रिटिसिज्म है कि इट वाज नॉट दैट इंक्लूसिव. SC ST and minority faced poverty, malnutrition, mortality, current daily employment, etc. ये सब challenges रह गए थे, but ठीक है. We also lifted so many people out of the poverty. 12th 5-year plan 2012 to 2017. सेकेंड फाइनेंशियल क्राइसिस का इशू था. 2008 में आया था ना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. थीम वाज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ. ठीक है, फास्टर एंड मोर तो था ही. अब सस्टेनेबल ग्रोथ कब आया? 12th 5-year प्लान में. कब आया? 12th 5-year प्लान में. टारगेट ग्रोथ रेट था 9%. ठीक है, जीडीपी का रखना है 4% एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड 10% मैन्युफैक्चरिंग. 10% रिडक्शन इन पॉवर्टी, क्रिएट 50 मिलियन न्यू जॉब्स. ये सारी चीजें थी. IMR को, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को 26 करना है, MMR को 100 करना है, CSR चाइल्ड सेक्स रेशियो को 950 करना है, TFR को 2.1 करना है. इंक्रीज मीन स्कूल ईयर्स. ठीक है, मीन स्कूल ईयर जितना हम, ये नहीं कि सिर्फ स्कूल गए, मीन स्कूल ईयर को बढ़ाना. फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना. इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड रूरल टेली डेंसिटी, मतलब टेली कम्युनिकेशन, ICT, इन पे भी फोकस था. अब एक बार रिकैप कर लो. फर्स्ट प्लान क्या था? हेरोडमार मॉडल पे बेस्ड था. जैसे वहाँ पार्टीशन हो रहा था, रिफ्यूजी क्राइसिस थी, तो उसके लिए इन्होंने किस पे फोकस किया? एग्रीकल्चर पे, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने पे, पावर एंड ट्रांसपोर्ट पे. ठीक है, एक सक्सेसफुल प्लान था. रिहेबिलिटेशन अच्छे से हो पाया. अब आया सेकंड प्लान 1956 से 61. थोड़ा सा माइनरली मिस कर गया. महलनोबिस प्लान आया था. ठीक है, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस हुआ था और सोशलिस्टिक पैटर्न था. मॉडरेटली सक्सेसफुल रहा. थर्ड प्लान पे आओ, सेल्फ रिलायंट बनाने की बात की गई थी और सेल्फ जनरेटिंग. 61-66 था तो 65 वॉर था, अचीव नहीं कर पाया, ड्रॉट्स हुए थे. ठीक है, एंड उसके बाद प्लान हॉलीडे में गाडगिल फॉर्मूला आया था 66 to 69. ग्रीन रेवोल्यूशन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सबकी बात की गई थी. फोर्थ 5-year प्लान 69 to 74 मिजरेबली फेल हो गया था. ठीक है, बिकॉज 71 का वॉर था. ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड सेल्फ रिलायंस. सेल्फ रिलायंस की बात आपकी यहाँ भी की गई थी, बट सबसे पहले सेल्फ रिलायंस की बात कहाँ की गई? थर्ड प्लान में. ठीक है, याद रखना आपको. ग्रोथ विद स्टेबिलिटी फोर्थ प्लान में था. एग्रीकल्चर ग्रोथ पे था फोकस, इन्फ्लेशन कम करना क्योंकि रिफ्यूजी क्राइसिस वगैरह हो रहे थे, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक हुआ. फिफ्थ प्लान आया, इसने अचीव किया टारगेट को. गरीबी हटाओ का क्लेरियन कॉल दिया गया था. सेल्फ रिलायंस इसमें भी रहा. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, रूरल रीजनल बैंक्स, ये सब शुरू हुए फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए. सिक्स्थ प्लान IPG में एक गैप रहा जनता पार्टी के टाइम. फिर 1980-85 फिर आया. अगेन इट वाज सक्सेसफुल. 5.7% ग्रोथ हाईएस्ट रहा और नेशनल इनकम मॉडर्नाइजेशन, इन सब पे, पॉवर्टी, इन सब पे बात की गई. सेवंथ प्लान आया राजीव गांधी के टाइम में. 5% रखा तो पहली बार हम 6% अचीव किए. फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पे इन्होंने बात की. प्लान काफी सक्सेसफुल रहा था. स्ट्रगल हमने आउट हुए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ से इससे. उसके बाद फिर एक गैप रहा 2 साल का. फिर आया 8th 5-year प्लान. उसके बाद हमारा आया, ये था जॉन मिलर मॉडल पे बेस्ड था. PV नरसिम्हा राव, वी केम आउट ऑफ द सोशलिस्टिक क्लचेस. 5.6 से 6.8 पे आए. ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, इस वजह से हम IMF के पास गए. बेल आउट हुआ, ओपनिंग ऑफ इकोनॉमी हुआ. एग्रीकल्चर लाइट सेक्टर पे भी और मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट सब पे फोकस किया गया. ठीक है, पब्लिक सेक्टर का जो शेयर था वो कम हुआ और नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम लाया गया. 9th प्लान 1997 से 2002 रहा, जो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा. ग्रोथ विद सोशल जस्टिस की बात की गई. आपने देखा उस टाइम पे बहुत सारे तीसरा मोर्चा जिसको बोलते हैं वो सब, तो उनका एक रहता है कॉल सोशल जस्टिस का, तो उससे आप याद रखिए. इंडिकेटिव प्लानिंग की बात की गई थी और ग्लोबल स्लो डाउन का उतना सक्सेसफुल नहीं रहा. 2002 से 2007 वेरी हाई ग्रोथ का जो था हमारा टारगेट 8%, हमने ऑलमोस्ट अचीव कर लिया था. एंड मॉनिटरेबल 11 टारगेट रखे थे. लिटरेसी पे फोकस था, IMR, MMR, हेल्थ और एजुकेशन में प्राइम फोकस था. क्लीन वाटर पे, इन्वायरमेंट को क्लीन करने पे. ठीक है, गवर्नेंस की बात की गई थी बहुत अच्छे से और स्टेट का और PRI का रोल प्लानिंग में बढ़ाने की बात की गई थी और बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टेट्स. 11th 5-year प्लान पहली बार 8% ग्रोथ हुआ और टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, क्योंकि इंक्लूसिव ग्रोथ से स्ट्रगल कर रहा था इंडिया और माइनॉरिटी, SC ST इन सब का कंडीशन जो है उतना अच्छा नहीं था. विमेन, ठीक है, और सेविंग और इन्वेस्टमेंट रेट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी बढ़ गए.
12th प्लान सेकंड फाइनेंशियल क्राइसिस का असर दिखा, फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात की गई थी और पॉवर्टी वगैरह इन सबको कम करने की बात की गई थी। CSR 950, MMR 1000, IMR, TFR को 2.1 पे लाना, ठीक है, रिप्लेसमेंट लेवल पे, और फॉरेस्ट कवर बढ़ाना, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो फॉरेस्ट कवर आएगा। ICT रिवॉल्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंक्रीजिंग मीन स्कूल ईयर, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इतना आप याद रखो। मुझे लगता है ये अगर आपने लेक्चर देख लिया और मैंने तो रिकैप भी दे दिया है, तो यू विल बी इजीली एबल टू सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बेस्ट विशेस।